You two things, ma'am. One, the chief minister is clueless when it comes to certain things. On the one hand, he says the engineering graduates are not skilled enough. But the fact of the matter is, in Telangana, according to government's admission, not mine, both in a governor's address and also even in the budget speech of the government, they have made it very clear that the number of technology jobs have come down. Back in 2023, when we were in government, the total number of technology jobs, according to NASSCOM and STPI, was 9,46,000. It has come down by 7,000. It is now 9,39,000. First, the government needs to answer the question on how and why the tech jobs are coming down in Telangana. What is the reason for that? Is it because the engineers are not skilled enough, like the chief minister is saying? Or is it because the education ministry has failed? Or is it because employment opportunities are drying up? Or is it because of artificial intelligence? What is the cause? Firstly, they need to address it, number one. Number two, in fact, this government, this party, Congress, had promised to the youth of Telangana that they will waive off all examination fees. उन्होंने कहा था कि हर एग्जामिनेशन फीस को माफ कर देंगे. जो 200 रुपया था उसको आज बढ़ा के 1000 करें. That has been enhanced. The examination fees, not even examination, the application fees has been enhanced from 200 rupees to 1000 rupees. So the government also needs to answer on this hypocrisy of theirs. And thirdly and most importantly, మీరు నేను అందరికి కూడా మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే వాళ్ళ అసమర్థతని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి వాళ్ళ ఫెయిల్యూర్స్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక అలవాటుగా పరిపాటిగా మారింది. ఎప్పటికప్పుడు ఏదో ఒకటి వాగడం, దాన్ని సెంటర్ స్టేజ్కి తీసుకెళ్లడం, పెట్టడం, దాని చుట్టూ అందరూ పరిభ్రమించే విధంగా 4 రోజులు టైంపాస్ చేయడం, ఇప్పుడు 21 ఏళ్ళకే అని చెప్పి ఇది ఒక కొత్త డ్రామా కూడా. అందుకే ఆయన చేతిలో ఏమీ లేదు, ఆయనకు తెలుసు అది. కానీ ఆయన చేతిలో ఉన్నవి చేయడు, లేని వాటికి మాత్రం ఈ రకంగా నాటకాలు ఆడుతూ ఉంటాడు. కాబట్టి that's the unfortunate current state of affairs. आप कह रहे हैं सब नौजवानों को खुदकशी नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट्स को खास तौर पे, तो आप क्या एश्योरेंस दे रहे हैं? अगर आपकी हुकूमत आती है तो आप नौजवानों के लिए क्या करेंगे? जैसा यूथ डिक्लेरेशन अगर नहीं, जब वापस आएंगे हम लोग 2028 में, मैं बस इतना ही कहूँगा कि पिछले 5 साल जो है 2005 नहीं 10 साल 9.5 साल अगर मैं करेक्टली बोलूँ तो 2014 से लेकर 23 तक कोविड रहने के बावजूद हमने कुल मिला के 2,32,000 से ज़्यादा नोटिफिकेशन हमने दी और उसमें से 1,60,000 एम्प्लॉयमेंट पूरा मुकम्मल हमने किया वादा. और बाकी जो कोर्ट केसेस के वजह से 70,000 कुछ पेंडिंग थे, उसके कागज़ इन्हों दे के, अब के चीफ मिनिस्टर दे के आज कुछ भी बोल रहे हैं उन्होंने. और साथ ही साथ हमारे प्रवीण भाई याद दिला रहे हैं मेरे को, प्राइवेट सेक्टर में 24 लाख से ज़्यादा, आईटी और बाकी सेक्टर्स में 24 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली गवर्नमेंट हमारी है तेलंगाना में, केसीआर गवर्नमेंट. आज मैं देखते रहता हूँ, कभी का एक बार हंस भी लेता हूँ. हाल ही में चीफ मिनिस्टर गए थे महबूब नगर, वहाँ जाके इनॉग्रेट करके बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं. क्या इनॉग्रेट करें आप? अमर राजा बैटरीज कौन लाए? केसीआर गवर्नमेंट. तो ऐसे जो काम हम करें, जो फ्लाईओवर हम बनाए उसके ऊपर जाके पेंटिंग मार रहे. अब जो कंपनी हम लाए उसके जाके रिबन कट कर रहे. कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं, पर आप अपना कुछ दिखाओ जो करे. आप जो वादा करें, राहुल गांधी साहब जो वादा करें 2 लाख, एक पहले ही साल में 2 लाख रोजगार हम देंगे, गवर्नमेंट नौकरी हम देंगे. क्या हुआ उसका? जब वापस हम आएंगे 2028 में, मैं वादा करता हूं आपसे, पिछली बार जो 1-2 गलतियां हुए, जो छोटे छोटे मिस्टेक्स हुए हमारे तरफ से, उसको रेक्टिफाई करेंगे. एक तरीके से जैसे यूपीएससी चलती हैं उसी तरीके से ढंग से एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा. और मैं वादा करता हूं पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते कि सही तरीके से युवा की जो एस्पिरेशन है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, बैलेंस करके उनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना हमारी जिम्मेदारी.